Hi friends, you're back with me, your friend for biology, right? Professor Girish Kukreja. मागच्या काही लेक्चर्स मध्ये आपण काही बायोमॉलिक्युल्स बद्दल बोललो. वी टॉक्ड अबाउट कार्बोहायड्रेट्स, वी टॉक्ड अबाउट प्रोटीन्स, वी टॉक्ड अबाउट लिपिड्स, राईट. एखादं फूडचं पॅकेट जरी आपण घेतलं तर पाठीमागं त्याच्या लगेच दिसतं आपल्याला कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन आणि आपल्याला जे जास्त इंटरेस्टेड असतात ते म्हणजे तुमचे लिपिड्स, राईट, की किती फॅट आहे किती नाही आहे, मम्मी किती फॅट होईल. एनिवेज, सो वन बायोमॉलिक्यूल म्हणजे जो आपण मे बी इग्नोर करतो किंवा तो आपल्याला लक्षात येत नाही की दॅट इज अ पार्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल. कोणाला पण विचारलं की मॅक्रोमॉलिक्यूल कोणते, तर कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स लगेच येतात. पण एक जे आपण विसरतो जनरली तो म्हणजे आपले जीन्स. हे आपण पॅन्ट घालतो ती नाही. दॅट इज युअर जेनेटिक मटेरियल विच वी कॉल ॲज युअर DNA, राइट. आपल्याला सगळ्यांना माहित है दैट द जेनेटिक मटेरियल विच वी हैव. आई ऑलवेज से कि आपको बायोलॉजी में दूसरे किसी का कुछ नहीं पता रहा तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट आपको खुद का तो मालूम चाहिए. तर आपला तरी जेनेटिक मटेरियल किंवा आपण आपला म्हणूयात, प्लांट्सचं म्हणूयात, ॲनिमल्सचं म्हणूयात, बॅक्टेरियाचं म्हणूयात, काही व्हायरसेसचं म्हणूयात, राईट. सगळ्यांचं जेनेटिक मटेरियल ओव्हरऑल युनिव्हर्सल आपण म्हणूयात, एक्सेप्ट सर्टन व्हायरसेस. हा म्हणजे कोण आहे? तुमचा DNA. अँड यू नो त्याची एक छोटी बहीण आहे, दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज RNA. ती ऍक्च्युली आधी आलती बरं का एव्होल्युशन मध्ये. एनिवेज, दॅट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर, बट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर इज की देर आर व्हॉट यू कॉल एज दिस अनदर macromolecule which comes along with your polysaccharide, which comes along with your proteins, and which comes in that acid insoluble fraction. You remember we had seen that when you take that tissue and grind it and put it in that trichloroacetic acid and filter it, so you get some molecules which are of high molecular weight, which you call as macromolecules, right? So in that class of macromolecules, along with your polysaccharide, along with your proteins, which we saw were polypeptides, we have this polynucleotide. Yes, the macromolecule which we will be talking about today is your nucleic acid. तुम्ही कुठेतरी त्या सेल चॅप्टर मध्ये पाहिलं की समथिंग विच इज प्रेझेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. युकॅरियोटिक असेल तर, प्रोकॅरियोट बिचारे गरीबकडे न्यूक्लियस नाही. एनिवेज, वरकटतोय ना मी? हा, येस. तो आपण जास्त न वरकटता, एज आय सेड दॅट वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन द सेक्शन गिवन इन NCERT स्टँडर्ड 11 about these nucleic acid. So there are many other things which are given about these nucleic acids, but we'll be discussing only about the part which is given in NCERT standard 11, right? So it is an acid insoluble fraction. So along with your polysaccharides, along with your proteins, this is what you call as another macromolecule which we refer to as polynucleotide. You remember we had seen proteins were polypeptide. So many amino acids, when you join together, they form what is called as a protein. So many nucleotide, when you join together, you form what is called as your nucleic acid, right? So polynucleotide naam mein hai. Like when you talk about protein, you should first know about amino acid. When you talk about lipids, you should know about fatty acid, which we saw in the last lecture. And if you are talking about nucleic acid, you should know about nucleotides. So the building block of these particular nucleic acids is your nucleotides. So many nucleotides join together, है ना. आप एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड ऐसे ज्वाइन करते जाएंगे तो you form what is called as your polynucleotide. In the reduced syllabus they have reduced those bonds and the nature of the bonds, but then सिर्फ only for information I am telling you, किसको बताना मत, that they are joined by phosphodiester linkages, right? So linkages which join them, they are phosphodiester. जैसे प्रोटीन में it was a peptide bond, कार्बोहाइड्रेट्स में it is glycosidic bond, yes. और यहाँ पे कौन सा है आपका phosphodiester bond. Forget it. Anyways, मैंने नहीं भी बोला तो you're going to forget it. So you have these building blocks which are what is called as nucleotides. अब इसका building block कितना complex है. Anyways, I'll make it simple. It is made of three things. One is a heterocyclic nitrogen containing compound, है ना. बायोमॉलिक्यूल्स में शुरुआत में उन्होंने जब अलग अलग कंपाउंड डिस्कस किए तब ये डिस्कस किए. There are these heterocyclic ring compounds, जो आपको दिख रहे हैं, which are purines, and you have pyrimidines, right? Those which have these two rings, they are what is called as purines, and those which have a single ring, they are what is called as pyrimidines. I'm not talking about you being single. I'm talking about the ring being single. Yeah, so maybe it is the month of February, it will become double. They don't become like that. Anyways, so it is purine or what is called as your pyrimidine. So pyrimidine or pyrimidine, whatever you call it. So purines, you have adenine and guanine, AG.
OG, logi, sunogi, not like that. So adenine and guanine are what is called as or two purines, right? And pyrimidines you have thymine, cytosine, and uracil. So three pyrimidines which we know, single ring compound derivatives. They are your thymine, cytosine, and your uracil. So the derivative of these two rings is your this adenine. You can see here. And here you have a structure of uracil as a representative. इतने दो ही स्ट्रक्चर आपको 11th में बायोलॉजी में तो याद रखने हैं, 12th में और केमिस्ट्री में, बायोमोलिक्यूल्स में बाद में देखेंगे. थोड़ा थोड़ा करो, है ना. हम बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, तो हम सागर के पास बाद में जाएंगे. We'll be talking about these small structures. So here you have what is called as your these purines and what is called as your pyrimidines. So this structure याद रखो, यहाँ पे अमाइनो दो अगर रिंग दिख रहे तो that is what is called as purine. ये दो दो O अगर दिख रहे तो that is what is called as your uracil, right? So purines AG and pyrimidines thymine, cytosine, and what is called as uracil. It contains a monosaccharide which is a 5 carbon sugar, which is what is called as a pentose, right? So we have a 5 carbon sugar that is called as a pentose, right? So this 5 carbon sugar pentose, you will find second prime position पे अगर OH है, then we refer to it as a ribose sugar found in ribose nucleic acid, राइट. एंड अगर यहाँ पे अगर O नहीं है, राइट, यहाँ पे अगर सिर्फ H है, वी रिफर टू एज deoxyribose. So sugar it could be either ribose, so found in RNA, it could be 2' deoxy, नाम में ये 2', ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, यहाँ पे आपका फिफ्थ कार्बन, राइट. सो यहाँ पे अगर सेकेंड पोजीशन पे OH है, वी कॉल इट एज राइबोस, और सेकेंड पोजीशन पे अगर H है, we call it as deoxyribose sugar, right? So sugar it could be ribose or deoxyribose, right? So यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में you have a nitrogen base, एंड यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे ये दोनों अगर आपने अटैच कर लिए, एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस, यू कॉल इट एज न्यूक्लियोसाइड. इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड, राइट. एक शुगर ले ली, 5 कार्बन की पेंटोज, डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों में शुगर कौन सी होने वाली है? पेंटोज. दोनों में शुगर कौन सी है? पेंटोज, विच इज अ 5 कार्बन शुगर. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Here you can see that this particular sugar which is there, it is your 5 carbon, that is pentose, whether it is DNA or RNA, right? Both have 5 carbon. But अगर second position पे OH है, हम उसको क्या बोलेंगे? Ribose. Second position पे H है, O नहीं है, so we call it as deoxyribose. Anyway, so मैंने शुगर को एक नाइट्रोजन बेस अटैच कर दिया, कोई भी, मैंने अगर यहाँ पे एडेनाइन अटैच कर दिया तो दिस विल बिकम एडिनोसाइन, राइट. तो ये मेरे हम बोलेंगे प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स है. तो एडेनाइन का इट विल बिकम एडिनोसाइन, ग्वानिन का इट विल बिकम ग्वानोसाइन. इफ आई अटैच देयर थायमिन इट विल बिकम थायमिडिन, साइटोसिन साइटिडिन, एंड यूरासिल इफ आई अटैच इट बिकम्स यूरिडीन. सो यू अटैच अ शुगर एंड अ नाइट्रोजन बेस, इट बिकम्स न्यूक्लियोसाइड. साइड क्यों बोला? फॉस्फेट साइड में कर दिया इन्होंने. सो इफ देयर इज अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट हियर, राइट, इफ देयर इज अटैचमेंट ऑफ अ phosphate here, we call it as a nucleotide. Yeah, so this is a nucleoside up till now here, और अगर आपने ये भी include कर दिया, this becomes a nucleotide. So nucleotide has a phosphate at the 5th position, 5'. ज्यादा स्ट्रक्चर्स की डिटेल में नहीं गया मैं, एज आई टोल्ड ये 12th में आप पढ़ेंगे. बट एनीवेज अभी आ गया तो आप याद रखो कि पहले कार्बन पे शुगर के देयर इज अ नाइट्रोजन बेस, और 5वें कार्बन पे शुगर के देयर इज अ फॉस्फेट. अगर आपने फॉस्फेट भी अटैच कर दिया, इट इज न्यूक्लियोटाइड. फॉस्फेट को साइड कर दिया, देन इट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसाइड. एनीवेज, सो एडिनोसाइन में आपने एक फॉस्फेट अटैच कर दिया, नाउ इट विल बिकम्स एडिनाइलिक एसिड. सो दिस वाज एडिनोसाइन जब ये नहीं था, अब ये है. तो जब तुम नहीं थे तो मैं क्या था, अब तुम हो तो मैं क्या हूं. तो ऐसा फॉस्फेट बोलता है कि अगर मैं नहीं था तो तुम न्यूक्लियोसाइड थे, मेरे आने से तुम क्या बन गए? न्यूक्लियोटाइड. तो व्हाइट हो तो टाइड हो. मैंने व्हाइट नहीं पहना. एनीवेज, सो यू हैव दिस adenine, then you have this phosphate, so this now becomes adenyllic acid, right? So ये क्या बन गया आपका? adenyllic acid. So this is what is called as a nucleotide. Guanine, guanosine, guanyllic acid. Great. ये याद रखो, ये टेबल याद रखो.
chair bhul jao, table. So table here you have this adenine will become adenosine after addition of the sugar. After addition of phosphate it will become adenalic acid. Guanine, guanosine, it will become guanalic acid. Thymine, thymidine, thymidalic acid. Cytosine, cytidine, cytidalic acid. Uracil, uridine and uridalic acid. इनको याद रखना इजी है. डाइलिक डाइलिक एसिड एसिड न्यूक्लियोटाइड पूरा कंप्लीट हो गया. एक शुगर, एक नाइट्रोजन बेस और एक फॉस्फेट, राइट. ये थोड़ा सा एडेनाइन, एडेनोसाइन, ग्वानिन, ग्वानोसाइन, थायमिन, थायमिडीन, साइटोसिन, साइटिडीन, इसमें कंफ्यूजन मत करना. यहाँ पे लोग पूछते फाइंड द ऑड मैन आउट, फिर आपको देंगे एडेनोसाइन, ग्वानोसाइन, थायमिन, साइटिडीन, यूरिडीन. तो थायमिन विल बी ऑड क्योंकि वो नाइट्रोजन बेस है, बाकी सारे क्या है न्यूक्लियोसाइड. तो ये आपको याद रखने. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज nucleic acid in 11th standard NCERT. Many more things like how they are arranged, how DNA looks like, how RNA looks like, we'll be discussing. यहाँ पे दिया नहीं उन्होंने, पर आप मुझसे ज्यादा होशियार है और जो स्पेशली 12th स्टैंडर्ड में उनके लिए ये सवाल है कि RNA में मतलब there are two nucleo what you call as nitrogen bases out of these and DNA में there are two nitrogen bases out of these. ये दोनों सेम है, AGOG दोनों में सेम है. एडेनाइन, ग्वानिन, DNA हो या RNA हो, दोनों में कैसे सेम. बट अगर हम pyrimidines की बात कर रहे हैं, RNA में there are two pyrimidines and DNA में there are two pyrimidines. तो you have to tell me in the comment box like what does RNA does not have and what does RNA have instead of that pyrimidine. To give you a hint, I'll tell you, RNA को चाय पसंद नहीं, RNA को आप पसंद है. So RNA doesn't like चाय, converted in English, and RNA likes you. Oh, sorry, I said a what. So RNA को आप पसंद है. तो I don't know बेबी को बेस पसंद है क्या नहीं, but इसको तो चाय पसंद नहीं है. RNA doesn't love चाय, RNA loves आपको. Anyways, so this is what is called as nucleic acid. To give a brief summary as we do in every video, न्यूक्लिक एसिड कैसा है? एसिड इनसोल्यूबल. बाकी सब बकवास में ये मत भूल जाना. न्यूक्लिक एसिड एसिड इनसोल्यूबल, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मैक्रोमोलिक्यूल है. उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स न्यूक्लियोटाइड्स है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन. प्यूरिन में कितने रिंग है? 2. पिरिमिडिन में कितना है? 1. एजी, एडेनाइन, ग्वानिन कौन है? प्यूरिन्स. थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल कौन है? पिरिमिडिन्स. इनको अगर मैंने एक शुगर अटैच कर दी, पेंटोस, अगर राइबोज अटैच कर दी तो राइबो न्यूक्लियोटाइड बनेगा. डीऑक्सीराइबोज अटैच कर दी तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बनेगा. ये डिफरेंस कितने पोजीशन पे? सेकंड. सेकंड पे OH है तो इट इज राइबोज, H है, O नहीं है तो इट इज डीऑक्सीराइबोज. अगर इसमें मैं फॉस्फेट अटैच कर देता हूं, इट बिकम्स न्यूक्लियोटाइड. सो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड. एक कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता दो, न्यूक्लियोटाइड माइनस न्यूक्लियोसाइड will give me what? So give me that in the comment box. So stay tuned with me, Professor Girish Kukreja. If you want some specific videos on some specific topics, so please ping me there and contact me. Thank you so much and great love and lots of best wishes for those who are preparing for NEET and are aspiring to become future doctors. Thank you.